हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपर्ट टेक्निकल ट्यूब। पिछले वीडियो में आप लोगों का रिस्पांस देख के मुझे ये मोटिवेशन मिल रहा है कि मैं इसका आगे इस चीज़ वीडियो को कंटिन्यू करूं, इसलिए मैं ये पार्ट 2 लेके आया हूं। वही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के, और उसमें भी आपको 25 ही क्वेश्चंस होंगे इसमें भी जो आंसर के साथ हैं। और होप आशा करता हूं मैं कि आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आएगा। तो जो भी कंपटीशन की तैयारी जो लोग कर रहे हैं, जो कैंडिडेट कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी, उनको ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगेगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं आपको क्वेश्चंस की तरफ ले चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, ए प्रोग्राम डिज़ाइन टू डिस्ट्रॉय डाटा on your computer which can transfer to other computer and infect data is called dash। इसमें 5 MCQs हैं, आंसर्स हैं, मीन्स मल्टीपल चॉइस। पहला है वायरस, बी है इन्फेक्टर, सी फाइल, डी ऐप एंड ई इज नन ऑफ अबव, मीन्स नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर है वायरस। क्वेश्चन नंबर 2, EEPROM stands for, EEPROM stands for, इसमें भी 5 हैं। ए है इलेक्ट्रिकली अरेज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, बी इलेक्ट्रॉनिक अरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, सी इजिली अरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, डी एवर नॉन अरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, ई नन ऑफ दिस। राइट आंसर है इलेक्ट्रिकली अरेज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EEPROM का फुल फॉर्म भी यही होता है, इलेक्ट्रिकली अरेज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन 3, द स्पीड ऑफ द डाटा ट्रांसमिशन इन द नेटवर्क इज कैलकुलेटेड बाय डैश। ए बिट पर सेकेंड, बी जीबी पर आवर, सी निप्पल पर सेकेंड, डी एमबी पर सेकेंड, और ई नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर है बिट पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ डाटा ट्रांसमिशन आर मेनली कैलकुलेटेड बाय बिट पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड आउट हु इज नॉट द इन्वेंटर ऑफ ट्रांजिस्टर अमंग फॉलोइंग नेम्स। ए जॉन बर्डिन, बी विलियम शॉकली, सी वॉल्टर ब्राटेन, डी ली डी फॉरेस्ट, ई ऑल ऑफ द अबव। The right answer is Lee D. Forest. Lee D. Forest is the father of radio, not the transistor. Question number 5. If in a computer 16 bits are used to specify address in a RAM, the number of addresses will be dashed bit. A 216, B 64K, C 65536, D 1028, E none of this. The right answer is 65536. In a computer, 16 bits are used to specify address in a RAM. The number of addresses will be 65536 bits. Question 6. The processing speed of computer is depend on dash. A power supply, B clock pulse, C peripheral interfaces, D transmission size, E all of the above. Right answer is clock pulse. The clock pulse producing inside the computer is the major responsible for speed of the computer. Yeah. Question 7. Instruction in computer language consists of dash. A OP code, B operand, C source code, D oper source, E either A or B. Right answer is either A or B. Instruction in computer language consists of OP code and operand. Question 8. FORTRAN programming language is more suitable for dash. A business application, B marketing application, C scientific application, D social application, E none of this. Right answer is
scientific applications. FORTRAN programming language is more suitable for scientific application. Question 9. Accessing the information in one's computer without their knowledge is known as A. Tracking, B. Hacking, C. Routing, D. Copying, E. None of this. B. Hacking. As accessing the information in one's computer without their knowledge is known as hacking. Question 10. What is the difference between the CD ROM and CD RW? They are the same. A है जो है, they are the same, just two different terms used by different manufacturer. B. A CD ROM can be written to a CD RW cannot. B. CD RW can be written, but a CD ROM can only be read from. D. A CD ROM hold more information than a CD RW. E is none of this. The right answer is a CD RW can be written, but a CD ROM only can be read from. CD ROM can only read, and CD write can read and write both. Question 11. The scanner can scan a document or image by dash. A. Document by document, B. Line by line, C. Pixel by pixel, D. Paragraph by paragraph, E. None of this. Right answer, pixel by pixel. The scanner can scan a document or image by pixel by pixel. Question 12. In Excel chart are created using which option? A. Chart wizard, B. Pie chart, C. Pivot table, D. Bar chart, and D. E. None of this. The right answer is chart wizard. The chart can be created in the Excel by using chart wizard. Question 13. Rule of exchanging data between computers are called dash. A. Procedures, B. Protocols, C. Hyperlink, D. Program, E. None of this. Right answer is B, that is protocol. Protocol are rules of exchanging data between computers. Question 14. The software tools that enable a user to interact with the computer for a specific purpose are known as dash. A. Hardware, B. Network software, C. Shareware, D. Application, E. None of this. The right answer is application. The software tools that enable a user to interact with a computer for a specific purpose are known as application, apps. Question 15. A program which helps create written document and let you go back to make necessary correction is dash. A. Spreadsheet, B. Personal writer, C. Word printer, D. Word processor, E. None of this. The right answer is word processor. Next question. Question 16. When a file contains instructions that can be carried out by the computer, it is often called an dash file. A. Data, B. Information, C. Executable, D. Application, E. Assembly. The right answer is executable. 17. Firewall is used in communication network system to save dash. Unauthorized attack, B. Virus attack, C. Data driven attack, D. Fire attack, E. None of this. The right answer is A. Unauthorized attack. Question 18. The dash folder retains copy of message that you have started but are not ready to send. A. Inbox, B. Send mail, C. Trash, D. Spam, E. Outbox. The right answer is outbox. The outbox folder retains copy of message which are not sent. Question 19. Which of the following layer is the third layer of OSI layer? A. Physical, B. Application, C. Presentation, D. Network, E. Transport. The right answer is D. Network.
Network layer is third layer of OSI layer. Question 20. Which ports connect special type of music instrument to sound card? A. Bus, B. UPS, C. USB, D. MIDI, E. MIDI. The right answer is MIDI. MIDI, Musical Instrument Digital Interface, is a protocol designed to recording and playing back music on digital synthesizer that is supported by many make of personal computer sound cards. Question 21. While studying network, we may come across the term TCP. What does T present? A. Transistor, B. Transfer, C. Transmission, D. Travel, E. Traffic. C. Transmission. TCP, Transmission Control Protocol. Question 22. A dash computer is a large and expensive computer capable of simultaneously processing data for hundreds of thousands for users. A. Server, B. Mainframe, C. Desktop, D. Tablet, E. None of this. Right answer is B. Mainframe. 23rd question. What is the shortcut key to go to the file menu open in current program? A. Alert plus W, B. Control plus F, C. Alert plus F, D. Control plus W, E. None of this. Right answer is A. C. Alert Alt plus F. Alt plus F is shortcut key to go to file menu option in current program. Question 24. What is extension used in executable file? A is .txt, B is .ppl, C is .ppf, D is .exe, E is none of this. The right answer is .exe. The executable file can be stored in format .exe. The electronic path that connect one part of the computer to another is dash. A. Serial port, B. Parallel port, C. Logic gate, D. Bus, E. Terminal. T is bus. Thanks. सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें. अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है आपको पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत कम है मेरे चैनल पे और व्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं. इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को वीडियो तो अच्छा लग रहा है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है कि सब्सक्राइब कर दें. ठीक है, लेकिन मेरे पास जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो सफिशिएंट हैं. मैं उनको ही हेल्प करूंगा, उनको ही मैं ये दूंगा कि आप देखिए क्या चीज़ है. और नियर फ्यूचर में मैं बहुत कुछ लेके आने वाला हूँ इस प्लेटफॉर्म पे. तो आप मेरे साथ जुड़िए और मेरे को मोटिवेट कीजिए कि मैं और अच्छी चीज़ें आपको दे सकूँ. थैंक्स वंस अगेन. बाय.